Hello everyone, my name is Preeti Gupta and today we'll discuss about the series and the tutorials and another topic also. So let us start. I am sharing my screen. Okay. So wait for a minute. Yes. So today motivation is puts yourself because no one else is going to do it for you. It's true, right? So keep it in mind. It's a wonderful lines also and wonderful quotes also. So keep it in mind and move to the point. Okay. So today topic is method overloading. So what is method overloading and how to create a method overloading and method overloading how to use also. Okay. So let's start. Mm, uh, Topic is method overloading. Okay. So method overloading basically these types of method multiple method which have multiple method but same name but different parameters. Okay. So multiple overloading is method which have multiple method can have same name with different parameters. Okay. So let's see. uh and this name is my method. Name will be same, right? But parameter, but what? Just a minute. But parameter will be different. This parameter is int, this parameter is a double, this parameter is float, right? So yes. So this is the uh, we call multiple method, right? These have a multiple method with same name but different parameter. This is called a method overloading. That's it. So you can see that this is the int my method inside int x float my method float x, then double my method name will save and parameter will be different, right? So these all are parameters. These all are parameters. Okay. Consider from this example, and the example will be add the two numbers with different different parameter but same name. Okay, let's see. So we can see that static int plus method int, and we can pass two parameters like which is int x and int y. Okay. Inside block of code, I return x plus y. This is the add because both value will be added and then return. Okay. Then statics double same name and parameter will be different. Then again return x plus y. This is the main method. Inside main method, I already said inside main method, we have to call this method. Okay. So, this int my number, this value will be stored in new variables. That's why I was create on this int my num. Okay. And just pass the two numbers. This will be number 8 and 5. Right? Value will be x is 8 and y is 5, right? Then again double. I already assigned this method. I call this method 4.3 and assign this another variables, new variables. Okay, and then print both of the variables like both of the numbers. Okay, and then we can see that. Just a minute. Yeah, we can see this is the yes. This is the int is 13 because when you have to pass 8 plus 5. Uh, First we have to check inside main method. Okay. Inside main method, initialize new variables my num1 and equal to 5 my method. And this compile check to my method, my plus method int is available or not is yes. Then go to this variable because this is int type. Then this variable we have to go to and pass 8 plus 5.
8 plus 8 and 5. This inside 8 plus 5, inside this variable is 8 and this variable y is y. Then return will be 13. Okay. Again, assign the new variable double. This types double. My num2. Again, we have to call this and 4.3. 4.3. We have to check this plus method, double method will be available or not. It's yes. Then go to this. Okay. Double x and double y. Okay. And then you have to print this double is equal to like. Okay. And then we have to print this is a test. Okay, because we can see that in this is a test tab. We have to store in test, then add on concatenations, then print on their numbers like these variables, and double my num2. Yes. So my all the is, so basically method will be different parameter but same name like that. Okay. Yes. So move to the point. Okay. Instead of define two method that should be the same thing, it is better to overload one. Okay. सो इससे पहले मैंने जो मेथड देखा था, सेम सेम थिंग्स मैंने किया था, राइट? बट मतलब कि दो मेथड क्रिएट करने के बाद एक क्या था, प्लस मेथड इंट, एक क्या था प्लस मेथड मेथड डबल. But in this example below, we overload the plus method. We work int and double both in one method. This is called a method overloading. मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये सिनेरियो है, ठीक है, कि ऐसे मैंने जैसे कि मैंने बनाया, दो मेथड मैंने क्रिएट किया और उसमें मैंने सेम काम किया, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको ओवरकम के हम एक मेथड का यूज कर लेते, इस वजह से मेथड ओवरलोडिंग का यूज हुआ. सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक दैट वी कैन सी. जस्ट see, this is example of method overloading. Okay, same name will be same, right? But method parameter will be different. But काम तो एक ही चल रहा है ना, बट क्या है, पैरामीटर क्या है उसका डिफरेंट है. So yes, we can do that with same name. This is called a method overloading. Inside you can see double minimum 4.3 and the same output will be there 13 and 4.0 10 point something like that. ओके. सो यस, तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि जस्ट अ मिनट, अभी मैंने क्या पढ़ा था, लाइक जैसे कि हमारा कोई दो नंबर को जैसे ऐड करना हो, तो हमें दो जैसे कि वैरी टैब्स क्या अलग अलग हो, इसका टैब जैसे कि इंट है, इसका डबल है, तो हमारे क्या एक डबल टैब का मेथड बनाना पड़ेगा, इन टैब का मेथड बनाना पड़ेगा, राइट? जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ये इन टैब का ही है, डबल टैब का है, बट देयर एंड देयर मेथड नेम इज प्लस मेथड इंट एंड देयर मेथड नेम इज प्लस मेथड डबल एंड देयर पैरामीटर विल बी डिफरेंट, राइट? बट इन मेथड ओवरलोडिंग में ये सिनेरियो ये है, ठीक है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में क्या है, सेम नेम है बट आप काम क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हो, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट के लिए. ओके, तो यही है कि सेम नेम आपने क्या किया, मतलब कि डबल में अलग अलग क्या किया मेथड और वो किया, और काम सेम ही, आईडी का काम चल रहा है, आईडी का प्रॉपर मेन मेन ऑपरेशन क्या है, सम का ही हो रहा है, बट क्या है अलग अलग, लाइक अलग अलग मेथड क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, दो मेथड क्रिएट हो रहा है. इस वजह से इसको ओवरकम करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग का यूज किया गया है, ठीक है. वी कैन सी दैट, जस्ट अ मिनट. यस, लाइक दैट. इसमें मैंने क्या किया, ओह, इसमें मैंने क्या किया, यस, जस्ट अ मिनट.
Yes. Oh yeah, sorry, just a minute. Wait for some, actually some this is the presentation, right? PPT, that's why this will come. So never mind. To the point. Return to work. ओके, इसमें मैंने क्या किया कि ऐसे मैंने क्या किया, सेम मेथड मैंने क्या किया, यूज किया, राइट? सेम मेथड मैंने किया बट मल्टीपल काम मैंने क्या किया। सेम घर में मैंने आ, सेम घर में मैंने मल्टीपल वर्क कर लिए। घर, हाउस एक है, ठीक है, और काम मुझे एक ही करना है, तो मैं एक ही अपने हाउस में, तो एक ही हाउस में करूंगी ना, क्यों दूसरे हाउस में जाऊंगी, है ना? तो लाइक दैट, ओके। तो यस, मूव टू द पॉइंट। यस, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब ये नोट कर लो कि just a minute, कि नोट, multiple method can have same name as long as the number or and or the types of parameters are different. Okay, इसमें क्या बोला है, मल्टीपल मेथड, मतलब कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग कि मल्टीपल मेथड हम सेम नेम में कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है, बट पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मूव टू द एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यस, जस्ट अ मिनट। यस, the question is, what does method overloading mean? That the multiple classes have same class name with different constructor. That multiple method can have same name but different parameters. The methods can use switch statement overload condition. Which one is true? Pause the videos and tell me. Second one, okay? Okay. Next. Oh, just a minute. मैंने इसको fill ही नहीं किया. Try again. Yes. Multiple method can have same name as long the number or type of parameter are different. True. Scroll down. Okay. Question is the example of method overloading. ये method overloading example है. Yes. Plus method param name will be same. Yes. Uh, yes. मल्टीपल ओवरलोडिंग क्या है, नेम सेम होना चाहिए और पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। तो दोनों का नेम सेम है, यस है, पैरामीटर्स डिफरेंट, ओके है, बट टाइप सेम नहीं है ना, दो देयर इज नॉट अ टाइप। लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। ओके, नेम विल बी सेम राइट, बस पैरामीटर्स वो है, तो यस होगा ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, क्लोज, मूव टू द पॉइंट। यस, सो टुडे इज अ जावा स्कोप। ये मैं कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आज मैं थोड़ा बहुत लोडिंग कर रही थी, कल मैं जावा स्कोप एंड अनदर टॉपिक के लिए भी स्टार्ट करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड बी काम, बी पेशेंट, नेवर गिव अप, always keep learning and always be motivated and never give up and take care of yourselves. Thank you for watching my videos. Bye bye.